And we have some breaking news coming in. The Maharashtra Navnirman Sena leader Sandeep Deshpande has slammed Chief Minister Devendra Fadnavis. Mr. Deshpande has accused Chief Minister of spreading false information, alleging that the MNS changed their protest route. The MNS leader has it out, questioning why the government allows Gujaratis to protest but stop the Maharashtra Navnirman Sena from holding their own demonstration. Let's listen into what Mr. Deshpande said a short while back. आत्ताच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री यांनी असं सांगितलं की आम्ही मोर्चाला परवानगी देत होतो, फक्त रूट बदलायला सांगत होतो. मला स्पष्टपणे सांगायचं आहे की मोर्चाची परवानगी पोलीस द्यायला तयार नव्हते आणि जो रूट बदलण्याचा विषय आहे तो ते आम्हाला सांगत होते. घटना घडली मीरा रोड मध्ये, व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला मीरा रोड मध्ये आणि आम्हाला सांगत होते मोर्चा काढा घोडबंदर रोडला. मला सांगा, मीरा रोड मधल्या घटनेचा घोडबंदरला कोणी मोर्चा काढता का? याचा अर्थ तुम्हाला परवानगी द्यायची नव्हती. तुम्ही गुजरात्यांना परवानगी दिलीत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले, आमच्यावर पण गुन्हे दाखल करायचे होते. आम्ही कोणी नाही म्हटलेलं तुम्हाला. Well, let me go across to my colleague Nilesh now for more on this. Nilesh, take us through the protests that are taking place right now. The MNS claims that certain inflammatory remarks were made during the traders' protest. Is there any basis to those claims, and what's happening right now behind you? Nilesh, as far as the latest is concerned, we are currently surrounded by a massive number of Marathi supporters and party workers from MNS. Now, these are the pictures coming in from the main market of Mira Road, which is one of the key area of Mira Road. And now you can see it is a huge crowd. Thousands of supporters, Marathi workers have gathered on street, and in order to control them, a big number of police deployment is also seen. Heavy police bandobast is seen on the ground. Now the protesters are of a favor that if the Gujaratis, that is a protest which concluded a few days back, they can get permission from the officials, the police sources, police officials, then why not us? We are the son of the soil, and we are part of building Maharashtra. Then why this denial of permission is given to Marathi workers who are unable to protest, to register their protest? Now the claims are being made that the day that the shopkeepers had protested, they raised certain slogans which were against the Marathis, Smita, and as well as MNS, and after which they also, that is the Gujarati shopkeepers, extended an apology to the Commissioner of Police here in Mira Bhayandar, and later on the MNS workers, however, were adamant to register their protest onto the streets, which was supposed to begin from the Balaji Chowk, which is almost 1.5 kilometers away from where we are currently reporting from. So this was a protest also sustaining to the local MLA from the BJP, who also had condemned the act which was done by MNS, stating that we all have right to protect our culture and respect our culture, but we have no right to hit out at other individuals and cause harms to other individuals who are unable to speak Marathi. And since then, the Marathi workers are in an aggressive stance, stating that we are the one who have elected you, but you're not representing our side. Instead, you're speaking against us, and which is why this protest was supposed to reach out the BJP MLA's office as well. But now, in an interesting turn of events, Pratap Sarnaik, who happens to be Minister of Transport, Shinde Sena faction, have also extended his support to the Marathi protesters, stating what the police is doing is wrong, and he himself is reaching shortly into protest. He will be participating into the protest. You can see the protest is being joined by massive number of women as well, all raising slogans of Shivaji Maharaj. Now it is also interesting fact that though the protest was called by MNS, but at moment no political flags is seen. Instead, the Pataka of Shivaji Maharaj is flung here, which represents that these crowd is of Marathi legacy only. So we'll try to understand what currently these protesters want to say. ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पुलिस परमिशन आपको नहीं दिया गया है? मराठी भाषेचा विरोध करतात, मराठी भाषेवर ते अन्याय करायला लागले, त्याबद्दल न्याय मिळालाच पाहिजे मराठी भाषेला. मराठी आम्हाला हक्काने राहायची झालं पाहिजे, नाही कोणाची सक्ती चालली पाहिजे. आमची जन्मभूमी आहे, त्याप्रमाणे राहायला पाहिजे सगळ्यांनी. बताइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन सरकार कह रही है कि कुछ समय बाद कीजिए. फिलहाल आपको परमिशन नहीं दी गई. ऐसे कैसे हक से मराठी कसे नाही देंगे? मराठी भाषेसाठी आज मोर्चा काढलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठी चालणार पाहिजे.
हे मुंबई मराठी लोकांचे आहे, मराठीच चालेल, कोणाची सक्ती चालेल देश तो सबका है ना ताई, देश तो सबका है ना. आज मग सगळ्यांचं आहे तर मराठीच बोला, मराठीच प्रेमाने बोला. मराठीच बोललं पाहिजे. चालवायचं ना. आम्ही कोणत्या पक्षाकडून बोलत नाही. So these protesters are saying that they are not representing any political party, but their stance is clear that any individual who should speak Marathi, learn. They should speak Marathi, they should not malign the Marathi language, and the protesters also claiming that they're not representing any one particular political party. We'll come back to you, Nilesh, in just a short while. In the meantime, the Bharatiya Janata Party Member of Parliament from Godda in Jharkhand, Nishikant Dubey, has launched a blistering attack on the Maharashtra Navnirman Sena and has dared the MNS to visit Uttar Pradesh, Bihar or Tamil Nadu and try doing the same there. The BJP MP said, and I quote, "I dare them to go near the Mahim Dargah and try to assault any Urdu person like they did to a Hindi-speaking vendor recently." These are Nishikant Dubey's words. Here's what he said. क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है. सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई. हमारे पैसे पर पल रहे हो. तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है. आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई है, एसआर ने रिफाइनरी बैठाई, तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है. सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है, तो गुजरात में आ रही है. आप जो है लाटसाही कर रहे हो, और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो. और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो. आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे. ये अनार्की जो है नहीं चलेगी. हम मराठी का सम्मान करते हैं. मराठी एक आदरणीय भाषा है, और हम छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी जी महाराज, पेशवा, सबका जो है तात्या टोपे से लेके सभी का हम सम्मान करते हैं. उन सबों ने, तिलक हो चाहे लाजपत राय हो, सभी ने जो है आजादी के आंदोलन में, गोपाल कृष्ण गोखले हो, सबसे बड़ा योगदान दिया है. हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं. महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है. लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं. यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं, और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के